In this video, we will learn about what is the main purpose of number system conversion. So why number system conversion is used, and later on, what is the method to convert from one number system to another number system. So first one is need for number system conversion. There are many languages to communicate with people. So in this world, people can communicate with many languages. But when we type something or put some file in a computer by keyboard or some storage device medium, then computer does not understand directly. Computer क्या है? अगर हम उसे कोई भी फाइल देते हैं और कोई भी कीबोर्ड से इनपुट देते हैं तो वो डायरेक्टली फाइल को नहीं समझता है, इनपुट का नहीं समझता है ना, क्योंकि वो ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझता है. एवरी फाइल आर रिप्रेजेंटेड बाय नंबर इन अ कंप्यूटर सिस्टम. जितने भी फाइल है, इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, सब नंबर फॉर्मेट में बाद में कन्वर्ट हो जाता है. फॉर कंप्यूटर के लिए द अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज इज बाइनरी. सो विच लैंग्वेज इज अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर? बाइनरी. So binary is also number system, but expressing anything in binary causes way too many bits to be used. But what is the main problem in binary number system is this number system have so many bits to represent any data or any image. So to modify this concept, to manage this concept, we have to use hexadecimal number system. That is, 4 digits are represented by a single letter. As for example, if there is a decimal number system is 10, so there is 4 bit. But in hexadecimal number system, same presentation is A, which is more manageable than binary system. So in coding or any electronic circuit design, the concept of and any mathematical calculation, any programming, the concept of hexadecimal number system is almost many times used. So now let's about how we can convert one number based system to another based system. So mainly there are 3 types of number system conversion we study, and it is the very basic concept to convert from one base to another base. Always remember that. So first one is how to convert decimal number system to other base system. That is, decimal number system is the main base system. So first we learned about how we convert decimal number system to other base system. Then vice versa, other base system to decimal number system. Here decimal number system is a common number base systems, and these all conversion are directly converted. That is, other base to decimal, decimal to other, direct conversion. But other base to other base, that means binary to octal. So in binary to octal there is no direct conversion of decimal. There is no direct convert by binary to octal number system. First we have to convert binary to decimal, that is other to decimal, then decimal to other. और डेसिमल को फिर हम क्या करते हैं, ऑक्टल में कन्वर्ट कर देते हैं. अब क्या करेंगे, हम एक एक करके प्रत्येक नंबर कन्वर्सन के बारे में सीखते जाएंगे. सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज डेसिमल नंबर सिस्टम टू अदर बेस सिस्टम. So to convert decimal number system to any other system, we have to follow the 2 steps. That is, first divide the number, that means decimal number, by the base of target base system. Target base system is which number is to be converted. In binary 2, that means if we convert decimal to binary, then we have to divide by binary base 2. If we convert decimal to octal, then what is the base of octal? 8. So we have to divide by decimal number by 8. And what is the base of hexadecimal? 16. So if we convert decimal into hexadecimal, we have to divide by 16. And at last, write the remainder from step 1 as a least significant
bit LSB to step last as a most significant bit. So these one are the MSB most significant bit, and this one is the least significant bit. So MSB to एट लास्ट में हमको क्या करना है, नीचे से लेकर MSB से शुरू करना है और लास्ट LSB तक लास्ट कर देना है. सो बाइनरी रिजल्ट अगर हम डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे तो नीचे से लेकर ऊपर तक हमको क्या होगा, लिखना होगा. जैसे कि एग्जांपल में हम ये 237 को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं. सो व्हाट इज द डेसिमल नंबर सिस्टम? 2 3 7. Two, 3, 7 is divided by 2. So 2, 3, 7 is divided by 2. 2 1 जा 2. Now 3 is right below. Again 2 1 जा 2. So 3 minus 2 equal to 1. ये जो 7 है इसको क्या करेंगे, हम इधर लिखेंगे. नॉर्मली जो हम भाग करते हैं, डिवीजन करते हैं, वही मेथड है. सो 2 8 जा 16. इस राइट साइड में क्या लिखना होता है हमको, रिमाइंडर. सो इसमें अगर हम 237 का 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आया, 1. सो 1 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट साइड में लिख देंगे. और क्वेश्चन कितना आया, 118. इसको हम क्या करेंगे, ये जो 237 नंबर जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, जस्ट उसके नीचे क्वेश्चन को हमको क्या करना होगा, लिख देना होगा. और सेम प्रोसेस हमको क्या करना है, चलाना है. जैसे कि हम अब क्या करेंगे, 2 से नेक्स्ट स्टेप, अगर 2 फिर क्या करना है, क्वेश्चन का क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है. अगर हम क्वेश्चन का 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 1 ये 8 यहाँ आ गया, ये 8 यहाँ आ गया, 2 9 जा 18, ये कट गया 0. सो इसमें क्या है, अगर हम 118 का 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट कितना आ गया, 259, और रिमाइंडर कितना आ गया, 0. ऐसे ही हम 59 का, इफ वी डिवाइड 59 by 2, then what is the remainder, 1, quotient 29. Again 29 is divided by 2, then what is the quotient, 14, remainder is 1. Remainder is 1. Again if we divide 14 by 2, then quotient is 7 and remainder is 0. Again 7 is divided by 2, quotient is 3 and remainder 1. Again if we divide 3 quotient by 2, then what is the quotient, 3 and remainder is 1. So then quotient is now not divisible, that means it is 0. उसके बाद क्या करना है, हमको नीचे से लेकर ऊपर तक लिख देना है. कितना हुआ, 1, ये, उसके बाद ये ऐसे 1 1
1 0, उसके बाद क्या है 1 1 0 1। ये क्या हो गया, इसका बाइनरी नंबर्स हो गया। 237 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो इसका बाइनरी नंबर कितना हो गया ये। अब हम डेसिमल नंबर सिस्टम से ऑक्टल नंबर सिस्टम कैसे कन्वर्ट करें वो सीखने जा रहे हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम कितना है 237, इसको हम क्या करेंगे ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। सो व्हाट इज आवर टारगेट बेस्ड नंबर सिस्टम ऑक्टल। So if you convert decimal number system to other, we have to divide by its target base number. Target base number system. So what is the base of octal number system? Its base is 8. So these number are divided by 8. So what is the number? 2 3 7. 237 is divided by 8. So 8 2 is 16. 8 2 is 16. So 7 and these 7 are put here. So 8 9 is 72. So 7 minus 2 equal to 5. So what is the remainder? 5. If you divide 237 by 8, so what is the remainder? And remainder is always right side. So 5 is the remainder. And what is the quotient? Again same process is done in quotient. So quotient is 2 9. Again if we divide by 8, so next one is 29. 29 is divided by 8, so 8 3 is 24. 8 3 is 24. So 9 minus 4 is 5. 5 is the remainder, and remainder is always right in right side, and the quotient is below to this number. So now it is not divisible by 8. So from bottom to up we have to write this number, that is 3 5 and 5. So this is our required octal number system. अगर हम 237 डेसिमल का अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो कितना रिजल्ट आएगा 355. सो नाउ वी हैव टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू हेक्साडेसिमल सिस्टम. सो व्हाट इज द टारगेट बेस नंबर सिस्टम? हेक्साडेसिमल. एंड इट्स बेस इज, व्हाट इज द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम? 16. सो our decimal number system is divided by 16. Same example as previous. If we convert decimal to octal, then we have to divide by 8, as same as if we convert decimal to hexadecimal, we have to divide by 16. So 16 ones are 16. 7 and this 7 is here. 16 4 the 64. 64. So if you subtract this number, 7 minus 4 3, 7 minus 6 1. So last one is remainder is 1 3. We put right side, and what is the quotient? 14. So 14 is right here.
So 14 is represented by which alphabet? E. And 13 is represented by D. So from bottom to top, the result should be E and D. So what is our required hexadecimal number system? ED. TunePocket.com